हेलो सर, अब आ रही है आवाज मेरी साफ? Yes. Test for convergence of the series. Instead of giving nth term, we have a series now of the series. Now, how it will be the series? You can see the series will be like this: summation 4.7.10, and it is continuing up to 3n plus 1 divided by, this is 1 into 2 into 3 up to n, and this is continuing up to n. Along with this, we have x power n also. And instead of giving nth term, a series format will be given. We are going to solve this series, and we are going to check whether it is convergent or divergent or whatever it is. So shall we start the solution writing? Yes, sir. Okay. So what happened here? You see, what is our un value? Can you tell me? What is our un value? 3n plus 1 by 3n No. plus 1 by n into x to the power of n, sir. Complete value, complete series, 4 into 7 into 10, and so on. 3n plus 3n plus 1 Yes, sir. divided by 1 into 2 into 3, and so on up to n into x to the power of n. This is un value. Now from Yes, sir. un we have to obtain un plus 1 value. From un we have to obtain un plus 1 value. So it will be like that: 4 into 7 into 10, and so on. This is 3n plus 1 will be there as it is. And when you are going to write Yes. n plus 1 term in the rough column, if you want, I'll simplify here and I'll show you. In place of n, we have to put n plus 1 plus 1. Amtu Rahman, Yes, your sir. sound is coming here. Nonsense. If you simplify, it is becomes 3n. 3 1s are 3 plus 1 is 4. So 3n plus 4 will be the next immediate term. 3n Yes, sir. plus 4 whole divided by 1 into 2 into 3, and so on. Okay. N will be there, and the next term will be n plus 1 term. And for this x power n, if you write n plus 1th term, it will be like this: n plus 1. Clear? Any doubt in this? No, sir. Now we are moving to find the value of un by un plus 1. It is equal to, the first fraction will be same. It will be 4 into 7 into 10, and so on. 3n plus 1, 3n plus 1, x to the power of n divided by 1 into 2 into 3, and so on n. It will be multiplied with the second fraction will become a reverse, that is reciprocal. It will be like this: 1 into 2 into 3, and so on, n into n plus 1, n into n plus 1 divided by, can you tell me what is the next denominator fraction? 4 into 7 into 10, 4 into and so on. Yes, sir. 3n plus 1, 3n plus 1, x to the power of n, sir. 3n plus 4,
into x power n plus 1. If you want, I will write it this one more clearly. This is only I will write 3n plus 1 into 3n plus 4 into n plus 1 can be written as x power n into x power 1 means x only. Umair, why you are leaving and coming, going, coming, going? Do you think that it is offline class? This is up to n plus 1. Up to n plus 1 it is cancelling out. X power n will be cancelling with this x power n. Even up to 1 nth term here it is also cancelling out. Tell me what is left of un by un plus 1 value. Tell me what is left of. What is left of? Tell me. Sir, it will be n plus 1 divided by 3n plus Very 4. good. N plus 1 in the numerator. And denominator 3n plus 4 is left off. Very good. 3n plus 4. And here, moreover, 1 by x also left off. Right? Right now? Taking n common from the numerator and taking n common from the denominator, how it will be? Un by un plus 1 value. Un by un plus 1 value, it is equal to n common 1 plus 1 by n. Denominator again n common 3 plus, give me the answer. After each and every step, I want your answer into 1 by x. What are the terms which are cancelled here? Tell me. This n will be cancelling out. Okay. Ji, sir. Then applying limit. Applying limit n tends to infinity on both sides. Right now? Both Limit sides. n Ji, tends to sir. infinity. Un by un plus 1. Un by un plus 1. It is equal to, before applying the limit, whatever the constant term, we can pull it out. 1 by x is a constant term, pulled it out, and limit will goes to, limit is varied from n tends to infinity, 1 plus 1 by n, and divided by, what is left of? 3 plus 3 plus 4 4 by by n. n. Can you tell 4 by me n. after applying the limit? 1 by n terms will be 0. Yes, so 1 by 4 by n terms, also 1 will by n become terms 0. will be 0. So 1 by Finally, 3. what is left of? 1 by 3 it will be. 1 by 3 1 by 3. x, where is x will go? Ji, sir. 1 by 3x will Yes, sir. be 1 by left 3. off. Yes. 3x. 1 by Ji, sir. 3x will be left off. So what do you say about this? When we say that, कब बोल सकते हैं इसको? आप convergent बोल सकते हैं? We can't say that now. By ratio test. नहीं सर. Yes, we should write their statement now. पूरे हमारे को outcomes लिखना पड़ता ना? We Yes, should by write all the ratio outcomes, test. right? What is that? If By 1 by 3x, 1 by 3x, give me the answer. 3x Come on. is Greater less than 1. Greater than 1. 1 by 3x is greater than 1. Which Then it is implies, convergent, sir. तो थोड़ा simplify form लिखेंगे. 3x. If you take the reciprocal, it is becomes less than 1. When dividing 3 on both sides, Less than 1, yes. x should be less than 1 by 3, then convergent, right? Then Ji, convergent. sir. You did this type of problem in your classrooms? आप कुछ तो आइडिया हुआ होगा ना, क्लास में कुछ तो करे होंगे ऐसा कुछ, या एक कंप्लीट नया कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको? नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट नया कॉन्सेप्ट तो नहीं, पी सीरीज के बहुत करवाए थे सर हम जी. x should be greater than 1 by 3. ये ऐसे क्वेश्चन करे नहीं, रेबी टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, कुछ भी नहीं. याद नहीं है शायद.
क्या बोले सर? इस टाइप के क्वेश्चंस करे क्या आप बोल के वो पूछ रहा हूँ बस इतना ही। याद तो नहीं है सर उतना। जी, x is equals to 1/3, then test fails, then test fails. So what we have to do when test fails? What we have to do? We have to check our problem when this situation arises. Which one? This one, right? When x is equal to 1/3, what happened to this? What happened to this series? We can check it. When x is equal to 1/3, and my question is where we have to substitute. कहाँ पे आप substitute करेंगे? X is equal to 1/3. So I told you here we have to substitute before taking n common. This is the equation number 1 we can take. If x value is 1/3, then how it will becomes? Acha, if x is equals to 1/3, write clearly. If x is equal to 1/3, then what about 1/x becomes? 1/x becomes 3 only, na? जी सर। तो यहाँ पे ये 1/x की प्लेस पे 3 रख के we have to simplify. This 3 we have to keep here, right? यहाँ पे रखेंगे 1/x की प्लेस पे 3 सब्स्टिट्यूट करें। आंसर दीजिए आप मेरे को, आंसर दिए तो पता चलता कि आप यू आर लिसनिंग माय क्लास। ओके सर। If 1/x is equals to 3, then how it will become? Next page I will take. नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, फिर से मैं आपको बाद में ये पेज बताऊंगा। So when x is equals to 3, our un by un plus 1 value becomes un by un plus 1 value. When x is equals to 1/x is equals to 3, so it will goes to numerator 3n plus 1 divided by 3n plus 4. ठीक है, 1/x यहाँ पे जो 1/x है here that will be taken as 3. तो 3 यहाँ लिखने के बदल इधर लिखे, राइट ना? ओके सर। तो ये कितना हो गया? हाउ मच इट इज बिकम्स 3n plus 3 by 3n plus 4. 3n plus Umer, can you hear me? जी सर। जी, for Rabee test what we have to do after this step? We have to subtract 1 on both sides. You remember Rabee test? Un by un plus 1 value, it is -1 if you subtract, though it is becomes 3n. अच्छा, आप मैं कैसा बोल सकते हैं यहाँ मेरे को ये स्टेप के बाद Rabee test से सॉल्व करना है बोल के? मैं आपको आज ही ये प्रॉब्लम की थोड़े हिंट्स दिया ना भाई, साथ में इसके हिंट्स दिया ना मैं आपको। इसको क्या बोलते हैं? इट इज व्हाट, दिस इज व्हाट सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एग्जैक्टली। टेस्ट करना सर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता कि नहीं होता बोलिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सर ये दैट इम्प्रॉपर इज फ्रैक्शन होता है क्योंकि 3n और 3n तो सेम। यस, नहीं, ये प्रॉपर न्यूमरेटर फ्रैक्शन है सर। हाँ, या प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, क्योंकि 3n plus 3 है ऊपर। यस, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सर वैसे वो फैक्टोरियल का क्या था? आप बोले कोई सम में फैक्टोरियल है तो कौन सा टेस्ट यूज करना? भूल गया मैं। रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट, default work, that is a ratio test. जी सर, रेशियो Okay, टेस्ट। so if you take the LCM and simplifying, your LCM will be what? 3n plus 4 will be the LCM. Here what happened? 3n plus 3. So if you multiply with minus sign, it will become 3n minus 4. So what are the terms which are cancelled here? This is 3n, this is minus 3n cancel. Then what is left of? We are left with 3 minus 4 is -1 divided by
3n plus 4 is left off. Now, according to the rule of the Rabee test, we have to multiply n on both sides. N times un by un plus 1 minus 1 equal to, if you multiply n on both sides, minus n. At the same time, I want to take n common from the denominator also. We are left with 3 plus 4 by n. So what happened here is n and n will be cancelling out. This n will be cancelling out. And then we have to take the limit n tends to infinity on both sides. Limit n tends to infinity n times un by un plus 1 un by un plus 1 minus 1 it is equal to limit n tends to infinite. आप चाहे तो इसको माइनस बाहर लिख के भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज माइनस इज ए कांस्टेंट टर्म, और अदरवाइज नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज 3 plus 4 by n. So as we apply the n tends to infinity, which is the term, what are the term become 0? ये 0 हो जाता ना. This is become 0 now. जी सर. So what is left of? Minus 1 by 3, which is definitely less than 1. So by which test we can say? By Rabee test. By Rabee's test. Less than को क्या है? Divergent है ना? By Rabee's test. Series. जी सर. Series divergent. रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं आप बिलाल? फिर से वापस क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग. जी सर सुन लो. जी, अभी मैं टुगेदर ये आज की क्लास की रिकॉर्डिंग हाँ। दोनों एक साथ भेजा देता हूँ. मेरे को याद नहीं था, मैं आके थोड़ा सो गया तो मेरे को याद नहीं है. फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे? हेंस गिवन series convergent if देखेंगे प्रीवियस पेज में जाके कब हो रहा कन्वर्जेंट कब हो रहा, लेस देन में हो रहा, डाइवर्जेंट ग्रेटर देन में भी हो रहा, इक्वल टू में भी हो रहा. तो लेस देन, if x is less than 1/3 1/3 and divergent if x is greater than or equal to 1/3, which is the end of this problem. तो अब दोनों के लिए मैं एक बार फ्रंट पेज मतलब फर्स्ट पेज बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए. कोई स्टेप में डाउट है तो बताइए, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जी सर. 1 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, 2 मिनट देख लीजिए. अच्छा, कोई भी स्टेप में डाउट आ रहा है मेरे को इमीडिएट बोलिए, दोनों भी. उमेर, कैन यू हियर मी? Yes, sir, I can hear you. Yes, if you have any doubt now, you tell me. I can explain this one. And I saw your message that you want the previous recordings also, so I will send you today only. Okay, sir. All the recordings and all the PDF whatever we did in this unit, I'll send it to you. And for Bilal, Rabee test के बाद में we have logarithmic test. जी सर. And then we have integral test, and then Leibniz test, sir. conditionally convergent and absolutely convergent. Absolutely convergent ये एक ही टॉपिक है, इसमें भी Leibniz test ही चाहता है. So ये these are together. Leibniz test, conditionally convergent, absolute convergent एक ही टॉपिक है, एक ही कॉन्सेप्ट है. Logarithmic test is a different concept. Integral test is a different concept. 1, 2, 3. 3 concepts are left. So maybe most probably Sunday तक आपको हो जाता है, यूनिट खत्म हो जाता. संडे तक इंफिनिट सीरीज होना था ना सर? हाँ, हो जाता है इंशाल्लाह. कल मैं मॉर्निंग में अराउंड 11:30 या 11 o'clock को एक और क्लास लूंगा मैं आपकी मॉर्निंग में 11 या 11:30 को. आई विल सेंड इट टू यू द मैसेज. And then one more class is after I think
tomorrow on Saturday I don't have afternoon classes, so I can take your class. I can take 2 sessions. इवनिंग में पॉसिबल है नहीं है, I don't know that. कल ही बोल देता हूँ मैं, कल मॉर्निंग क्लासेस के बाद ही शाम का अपडेट दे देता हूँ इंशाल्लाह. तो ठीक है मोस्ट सर. प्रोबब्ली विल ट्राई टू फिनिश दिस यूनिट ऑन संडे. मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि संडे हो जाना चाहिए. So next page you want, or anything you want to ask me here in this problem? Don't want next page? Next problem, sir. Next page you don't want? You are clear with this? जी sir. So then move on to the next page करेंगे. अच्छा, next problem को मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ. Pieces how much? जी, how much? Yes, what do you want? एक बार पीछे आते सर. एक मिनट, जरा मैं पेज बना ले रहा हूँ. नेक्स्ट पेज. जी sir. Just 1 second. Umair, how you feel these classes? Is it comfortable for you, the board and everything? Online classes यस बोल सर, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है. वो पहले के नोट्स वगैरह रिकॉर्डिंग है, वो चेक करते हैं आज बैठ के. जी. तो असल में प्रॉब्लम ये समझ में आ गया तो कल. आपके क्लासेस के जैसा खाली पीडीएफ देख के पढ़ने का शॉर्ट नहीं है, ठीक है? खाली पीडीएफ देख के पढ़ने का हाँ ऐसा सर. नहीं है बोल रहा हूँ. हाँ देखिए बिलाल, यू वांट द प्रीवियस पेज नाउ? दिस इज द प्रीवियस पेज. नहीं, जब स्टार्ट हुआ था सर क्वेश्चन. स्टार्टिंग क्वेश्चन, ओके, दिस वन. सर इसमें जो है, जी. हम जब स्टार्ट करे थे, लाइक रेड में आप लिखे तो सेकंड लाइन देखिए, 3n+1 है, फिर 3n+4 है. हाँ, ये इसीलिए मैं आपको बोला था रेशियो टेस्ट की पहली क्लास की रिकॉर्डिंग देखिए. जब भी सीरीज फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा ना, तो जब भी आप नेक्स्ट n+1 टर्म फाइंड आउट कर रहे सीरीज फॉर्म में, तो वी हैव टू रिप्लेस n विथ n+1 एंड वी हैव टू राइट द इमीडिएट नेक्स्ट टर्म. ये मैं ऑलरेडी क्लियरली रिकॉर्डिंग में भी बोला था. और जब खाली nth टर्म रहता अपने पास, ये खाली nth टर्म नहीं होता, ये पूरा सीरीज के साथ nth टर्म है, तो nth टर्म को तो आप n+1 रिप्लेस कर देना डायरेक्टली. बट अगर सीरीज है तो वो टर्म लिख के उसके बाद वाला टर्म लिखना. 3n+4 लिख के वहां पे आप पिंक से भी लिखा देखो, 3 टाइम्स ऑफ n+1 बोल के, तो इट इज बिकम 3n प्लस 3 1 3 प्लस 1 इज 3n+4. डिनोमिनेटर में भी n के बाद वाला टर्म n+1 लिखे. जबकि x में ऐसा नहीं करे अपन, डायरेक्टली wherever n is there we are replacing with n+1. What is the difference? I told you so many times, you can see the recording also. If you have a series now, series means immediate next term is called the n+1 term. If you have a nth term now, if you have a nth term, simply replace n with n+1. The problem which I did in the morning session, there we have the situation of nth term only. So what we did, wherever n is there, we are simply replacing with n+1, but we don't have the condition here. Here we have a series format, not only for Rabee test, not only for ratio test. Anywhere if you come across this type of situation where you will get the series, the next term will be obtained by replacing n with n+1. If you have a nth term, then you can replace simply n with n+1. That is the only difference. And I told you so many times, every question you have to start by default with ratio test only. After a few steps where the test fails, then we see which type of fraction we are getting. If you are getting proper fraction, then you have to apply Rabee test. If you are getting improper fraction, then you have to go for limit comparison test. Or if your answer will be e there, e times like ex, e power x or e by x like that, it means that you have to move on immediately for logarithmic test. Actually, this ratio test is a crossroad. After the crossroad, which route you have to move, that will be depending upon the nature of un by un+1. समझ में आई बात सबको? एक बार फिर से रिकॉर्डिंग में भी ये बात आप फिर से मैं बताया था, एक बार आप फिर से रिकॉर्डिंग में भी सुनिए, आपको ये पॉइंट
टेक्निकल पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सर, लाइक सर जी मेरी एक क्लास आप सैटरडे संडे भी लेने वाले थे सर। हाँ, आपके एक क्लास पेंडिंग है ना, कल की एक क्लास पेंडिंग है। जी, और सर सैटरडे तक खत्म कर सकते क्या इन्फिनिट सीरीज? नहीं होता जी, लॉगरिथमिक टेस्ट बहुत बड़ा है। Logarithmic अच्छा, test is not ओके। a small test. It's a very lengthy. It will takes one complete session, like 40 minutes only for the logarithmic. बहुत बड़ा है वो। बाकी उसके बाद के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाते हैं, बट Rabee test and logarithmic test, these are the only test. Maximum you will get the question from here. That's what is it. This is very much lengthy. क्यों संडे रिवीजन करना चाह रहे हैं आप? लाइक एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले सर? जी जी, सर, लाइक अगर एक्स्ट्रा क्लास भी हुआ तो सैटरडे तक नहीं होगा। एक्स्ट्रा क्लास भी आप ले लिए तो नहीं होता सर? कोशिश करेंगे। मैं तो मैक्सिमम जितनी जल्दी हो सका, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। हम्म, मैं कोशिश करता हूँ होने की। ओके सर, ओके सर, देखेंगे जी अभी सर। क्या पॉसिबल है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ सर, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। जी जी जी, लेट यस अस सर, मूव यस। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी लाइक, मैं मैक्सिमम ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, आप लोग को थोड़ा टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस बताने की कोशिश में हूँ। तो क्वेश्चन इज हियर, द क्वेश्चन इज हियर। Directly I'm writing test the convergence of the series. The question is 2 plus 3x by 2 plus 4x square by 3 plus 5 x power 3 by 4 plus and so on, plus and so on. And here already mentioned that x is a series of positive terms. So I'm writing the solution. Okay, now shall we start? I'm writing the solution. What we have to do, we should find out the nth term here first of all. अब देखिए nth term के से कुछ ट्रिक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। un is equals to, look at the denominator here. Can we say 1 is also available here? 1 is there now, nothing is there means 1 is there now. Hello, hello. जी सर, जरा आवाज लाग हुई थी। 1 2 3 4, what is the nth term? It is n only now. जी सर, स्टार्टिंग विथ 2 है तो सिंपल 2 प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा तो n लेना है, 2 से स्टार्ट हो रहा तो n प्लस 1 लेना है। नाउ x वैल्यूज आर आल्सो इंक्रीजिंग। यहाँ पे x पावर 0 है, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3। इट मींस दैट द वैल्यूज ऑफ x आर 3 2, ओके, 3 2 1 0। तो वैल्यूज ऑफ x आर इंक्रीजिंग एंड रिवर्स ऑर्डर में देखें तो डिक्रीजिंग हो रहे। n यहाँ पे x पावर 0 भी पॉसिबल है, तो इट विल बी लाइक दैट। चेक करिए, start checking. N is equals to 1 if you put 1 plus 1 2, 2 by 1 into x power 1 minus 1, any number power 0 is 1, so then you are getting the first term as 2. If you put n value is 2, 2 plus 1 is 3, n value is 2 means n value is 2 means denominator is 2. If n value is 2 means 2 minus 1 x power 1. We are getting or not? Umer, we are getting the nth term. जी सर। Now n plus 1 value, जी सर। n plus 1 वैल्यू, ये आप देखिए। अब क्या बोला मैं, बिलाल, द लॉजिक, विच टर्म इज इट? ये nth टर्म है या ये पूरी सीरीज है? ये nth टर्म है ना, सीरीज में से nth टर्म हाँ निकाल लिया आप, जी सर। तो आप डायरेक्टली n की हाँ प्लेस पे n प्लस 1 रिप्लेस करें तो वी आर गेटिंग n प्लस 2। एंड हियर आल्सो इफ यू रिप्लेस n विथ n plus 1, so it will be n plus 1. n plus And 1। here for this one,
If you replace n with n plus 1 minus 1 get cancelled, n 0 होता. n only left. Now next step is what? What is the next step? un by un plus 1. Un by un plus 1. Un by un plus 1. It is equal to, I think we don't have the time. Time थोड़ा कम बच गया. मैं चेक करता हूँ कितना टाइम लेफ्ट है. हाँ टाइम है 8 minutes है. We can do it. So numerator divided by denominator. So it will be like this. N plus 1 by n. And now if I split it, this numerator, I can write it as x power n into x power minus 1. Can I write like this? Multiplied by second fraction will become reverse. It will becomes like this. N plus 1 by n plus 2 into x power n. So which of the terms are cancelled? You can see I want to cancel this x power n. X power n will be cancelling out. और कुछ भी cancel नहीं होता देखिए. Okay, do not try to cancel it anything. It is not possible. So n plus 1 into n plus 1 together becomes n plus 1 whole square. n plus 1 whole square. N plus 1 whole square denominator Divided by n into n plus 2, right? Divided by we have n into square plus 2n. नहीं जरूरत नहीं है बाबा, कॉमन लेने से पड़ता है सब. n into n plus 1 and x power minus 1 can be written as 1 by x, right? 1 by x. जी sir. Right. Now moving to the next page. Moving to the next page and continuing this question. That is our un by un plus 1 value. Un by un plus 1 value, it is equal to, I want to write that step once again. That is, we are getting n plus 1 whole square by n into n plus 2 into 1 by x into 1 by x. So what I'll be doing here is numerator में से n square common लेंगे, denominator में से भी n common ले लेंगे. So it will be like this. If you take n square common, it will becomes like this. 1 by 1 plus n. यहाँ पे भी square हो जाता. Divided by, already n is there. Yes. If I'm taking one more n common, it is becomes square. And here left is 1 plus n 2 by plus n. 2 by n जी sir. into 1 by x. So this n square, this n square cancel. N square will be cancelling out. And now if I apply the limit n tends to infinity on both sides, like taking limit n tends to infinite, un by un. limit n tends to infinity both sides क्यों करते हैं? बस हम डायरेक्ट एक साइड कैसा नहीं कर सकते, कैसा कर सकते हैं जी? मैथमेटिक्स में पॉसिबल है क्या? कोई भी काम एक साइड नहीं कर सकते ना अपन. ऑन बोथ साइड्स करते ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इन वन साइड बोल के कभी सुने आप? हाँ सर. फिर तो we apply the limit for this term means automatically our intention to apply the limit for this term, but directly ऐसा apply नहीं कर सकते ना. We have to apply on both sides. जी. 1 plus both 2 sides. by n. हाँ sir. Yes. There is equality in mathematics always. Sorry, I wrote by mistake x it is. It is n. It is n. And here we are having 1 by x. अब चाहे तो 1 by x को बाहर भी ले सकते थे पहले इस स्टेप में. So as we apply the limit n tends to infinity, which of the terms becomes 0? Why that girl is shouting? I don't know. As we apply the limit n tends to infinity, what is the answer we are getting? जी. We are getting the answer is 1 by x. Right now? तो 1 क्या बोल by सकते हैं? x. By ratio test. By ratio test. Ratio test. If 1 by x is greater than 1, implies x is less than 1, then convergent.
then convergent. The second step will be, if 1 by x is less than 1, it means that x must be greater than 1, then divergent. Then divergent. And similarly, if 1 by x is equal to 1, it means that x value is equal to 1, then we say that test fails. Test fails. And we do not entertain that if you put x is equal to 1, we have to show a particular result when this situation arises, when x is equal to 1. And now I told you so many times where we have to substitute. We have to substitute in un by un plus 1 value. कहाँ पे रखते हैं आप? इसको देके बताता हूँ. ये यहाँ पे, इधर, राइट, यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 1 में बिफोर टेकिंग n कॉमन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट. ठीक है, राइट? जी सर. राइट, यस. तो we'll finish up this problem or we should wait 2 मिनट में होता होगा. Okay, let me continue. un by un plus 1 value, if x is equal to 1, you can see if x is equal to 1, I'll show you this. X is equal to 1 रखे तो 1 by 1 1 ही होता ना. We are getting what? n plus 1 whole square, n plus 1 whole square divided by n into n plus 2, n into n plus 2. Okay, so we should simplify this one. If you want, you can expand this. A square plus b square plus 2ab divided by it's what, n square plus 2n. अच्छा, आप बोलेंगे सर उधर एक्सपैंड नहीं करे, इधर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से मेरे को रेबी टेस्ट अप्लाई करना है. रेबी टेस्ट अप्लाई करने के लिए वी हैव टू सबट्रैक्ट -1 ऑन बोथ साइड्स. I'm sorry boys, we have to stop our class here because this indication is coming that the meeting will end less than 1 minute. So I'll continue after a few minutes. Once again, I'll tell you to join the meeting. I'll finish this question. If possible, I'll go for one more question. Today we can stop our discussing Rabi test, and tomorrow's class we can go for logarithmic test. Okay? ओके सर. End of this meeting because otherwise वो खुद से खत्म हो जाती. Less than 1 minute है. Recording share सेव नहीं होती फिर नहीं तो. ठीक है? ठीक है सर.